सिक्स्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन सोसाइटी फर्टिप्रोटेक्ट 2019 के इनाग्रेशन दिनांक 7 सितंबर को होटल माउंट व्यू चंडीगढ़ में हुई। यहाँ पर चीफ गेस्ट प्रोफेसर जी.के. रथ, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर अमिता सुनेजा जी और ये सारा कार्यक्रम डॉक्टर उमेशान जिंदल IVF हॉस्पिटल चंडीगढ़ जी के द्वारा करवाया गया। जिंदल IVF जो कि चंडीगढ़ में स्थित है और डॉक्टर उमेश जिंदल जी अपने इलाके में बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने कॉन्फ्रेंस का विशेष दौरा किया। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। Suggests that in 10 years after a cancer diagnosis, women are about 50% as possible without cancer diagnosis to go and get on pregnant. This is kind of acceptable. Next is, in general, women are advised, as Shreyash pointed out, are advised to avoid pregnancy during chemotherapy or radiation treatments, which may be damaging to the offspring. In addition, women with hormonally sensitive cancers, such as breast cancer, are advised to avoid pregnancy till the rough part is over, so something like 3 years post-treatment. After treatment for that cancer, women are assured that existing data does not suggest a subsequent increased risk of birth defects or that pregnancy increases the risk of cancer recurrence. However, some cancer treatments such as pelvic ovarian irradiation, certain agents do increase the risk of pregnancy loss and low birth weight babies. All these are points which have been mentioned by my previous speakers. Contraception, however, is a modality, is desired to allow women to ensure that pregnancies coincide with the period of their own optimum health. Alternative, women may also desire to avoid pregnancy indefinitely or maybe permanently as well. So that's their choice and we have to respect that. This is one slide which shows the current usage of contraceptive in cancer survivors in the US. And you see that almost 1/3 of the women there are on pills, around 1/6 on the IUD, and then the rest of the treatment modalities. These are the options that we have for contraception. We have the intrauterine device, the copper T, the Mirena or the LNG containing, the hormone-only contraceptives, and then you have the OCPs of the different kinds, the mini-pill, the BCP, the triphasic, the patch, the neoring, the barrier methods, the emergency and the natural methods. We do not talk about these because the failure rate is extremely high. As regards to the rest of the stuff, copper T, the advantages that you have is it lowers the risk of endometrial cancer, does not contain hormones. The advantage is it's reversible, effective for 10 to 20 years, and it is a very, very good effectivity rate. Again, with LNG-IUS, lowers the risk of endometrial cancer, should be used in breast cancer with care. We'll come to that a little later. Reversible, effective for 5 to 7 years, reduces bleeding. Irregular cycle is the side effect of the CONS. Again, very good effectivity. Implanon, just available in our country. Depo-Provera, again, these are the advantages and the disadvantages. As regarding the BCP, lowers the risk of ovarian cancer, but again, questionable, increases the risk. Attend this inauguration at the public forum. I very warmly welcome the press who has come and wants to, and who is our voice to the common man. And last of all, and most importantly, I welcome a few of our patients who would just like to share their experiences with us. So with that note, we would start the ceremony.
the office bearers of Fertility Preservation Society of India to the dais. Dr. Sabhyata Gupta. Ma'am is President Fertility Preservation Society of India and is heading the Department of Oncosurgery, Medanta Hospital, New Delhi. She is also Joint Secretary, Association of Gynae Oncology of India. I welcome you to the dais, ma'am. Dr. Sabhyata Gupta. Dr. Madhuri Patil. Ma'am is Vice President, Fertility Preservation Society of India. She is the Clinical Director of Dr. Patil's Fertility and Endoscopy Clinic, Bangalore, and is Editor-in-Chief for Journal of Human Reproductive Sciences, University College of Medical, and is a member of editorial board of various journals. We are grateful to you, sir, for taking out time from your busy schedule, and I'm extremely... Honorable Professor Rath, Professor Suneja, my dear friends and the members of the Executive Committee, Dr. Sabhyata, Dr. Madhuri, Dr. Padmarekha, Dr. Nalini, who is not here, Professor Gopinath, and Yash and Swati, Professor Anderson, Professor Christensen, who have gone all the way from Denmark, Professor Virgilio, who has come from all the way from Philippines. We welcome you, sir. All my dear friends, esteemed guests, delegates, faculty, I welcome you from the core of my heart to this conference, Fertiprotect, which is the 6th National Conference of the Fertility Preservation Society of India. I am glad to say that we have here a galaxy of eminent experts from different fields, including the oncologists, the surgeons, radiation and chemo experts, gynecologists, IVF specialists, embryologists, hematologists, urologists, surgeons and social scientists who work as a multidisciplinary team to give hope to young patients suffering from cancer so that they can become parents once their treatment is completed. I congratulate Dr. Nalini Mahajan, the founder president of the society, and the current office bearers of the society who are carrying on the torch for this noble cause, and they have created a platform where all these specialties can come together and bring this concept of fertility preservation forward and give quality of life to these patients. I have tried to put up a scientific program which should interest everyone, and I hope you will all enjoy the scientific programs, and I welcome all delegates to this inaugural ceremony and the public forum which follows, and I am really grateful to some of the patients who have come all the way to participate and to share their feelings with us at this occasion. Professor Rath, Madam Amita Snehta, and dignitaries on the dais, off the dais, and dear colleagues. As the president of this society, I again welcome you all to this 6th National Conference on Fertiprotect. Now the point is that we've been into this field and we've come a long way. We could reach here with under the guidance of course our seniors, and more than that, it's your cooperation, your suggestions, your contributions which has brought us here. What we can see, we've come a long way. We did our bit, but we have to go forth. We have to do a lot. We have to achieve a lot. In an endeavor to do this, what we are coming forth is, one of course, is this conference, and we do it year after year.
wherein we bring the national and the international faculty at one forum and we discuss everything. In addition to that, what we thought that we should come up with the recommendations also, which keeps in mind the, the current scenario, the facilities available, and keeping the practical orientation also in mind. No, certainly all the guidelines, they are backed with the evidence base. On releasing the recommendations by the FDS Society and the great passion with which Dr. Nalini Mahajan has taken pain to get us together and formulate these recommendations. Due to unforeseen problems, she had to leave, and so she would not be present here. Since the inception of the society in 2013, wherein we saw that when we approached the oncologist, basically none of the oncologists were ready even to listen to us when we spoke about fertility preservation. And now we have come a long way since then, over the last 6 years. And I think at least about 10 to 20% of the oncologists do now refer patients for fertility preservation. But as we looked at the international guidelines, many of things really do not apply to the Indian scenario. And we really did not have much evidence which has been published from India. And so what we thought of is that we visit each oncology hospital, we have a small meeting, and we had prepared a questionnaire, which we had a question answer session with all of them, and we took their opinions. And then based on these opinions, we have written the intent contest for each of the guidelines which is present from the International Society. And then what would suit our Indian patients, we have formulated as guidelines. Probably it needs to be slightly more refined because it was done in last 20 to 25 days. But I think what we intend to do is basically to distribute these guidelines to all the oncological hospitals, and we will see that we will do it by the end of October. And once we have circulated, we also then intend in publishing the guidelines. Probably it will be in a smaller version because this is a detailed guideline, and I think once published, it will be available for viewing for everybody. But at the beginning, we would distribute them to all the reproductive medicine specialists, the gynecologists and the oncologists. And I hope with these efforts of us, we will have more and more patients who would be referred for fertility preservation. And it's important that even the oncologists understand that which patient needs to be referred and which should not be referred. Because if the patient has stage 3 or 4 disease, I don't think that patient needs to be, that patient first needs to undergo treatment for oncology, then referred. But there are many patients who are really having the stage 1 and 2 disease, and they've not even been told. And when I met with so many oncologists when we took these recommendations, I found that they were too resistant even to listen to us or to think of referring the patients. So with the help of these recommendations, I think the awareness will increase among all the doctors in India, and probably we would see that more and more cancer survivors would be able to parent children. Thank you. Very good evening. At the beginning, before starting my formal address, let me tell you the best part of the conference is to invite Dr. Rath as chief guest. Sir, I'm your silent acknowledge. He is the no parallel person in this in our country who can match him. He's a radiation oncologist, has treated so many patients. Anytime you approach him, he's there for you. FPSI, Dr. Patil, Dr. Padma, and Dr. Yashwala, who is the pillar behind this conference, Dr. Umesh Jindal, and Dr. Swati. When my senior colleagues in the audience, dignitaries of the dais, and your friends. So it's a great privilege for me to stand here for the inaugural function of 6th Annual Conference of Fertility Preservation Society of India, Fertiprotect 2019. Its theme is very appropriate: awareness to application of fertility preservation to cancer patients. Cancer is no longer a deadly disease, and because of the advances made, it should be available to all, and so it should not be deprived of. Regarding the today's scientific session,
It is really an academic feast, a very well planned, and renowned experts of fertility and oncology are under one roof. And I'm sure delegates are going to take benefit from them, and they'll enjoy the beautiful city of Chandigarh. And I'm glad to know that Dr. Jindal's IVF Center is providing fertility preservation services to the needy people in Chandigarh. And I congratulate organizers for organizing this conference and wish you a great success. Thank you very much. Thank you, ma'am, for sharing your life with us and for such a wonderful deliberation. And now I invite our Secretary, Fertility Preservation Society of India, Dr. Padmarekha Jirge, to hand over a token of appreciation to our worthy guest of honor. Diabetes is neither preventable nor curable. Hypertension is neither preventable nor curable. Most thyroid diseases are not curable. You are on drugs for the whole life. Cancer, let me tell you, is 60% preventable. For our guests from outside, 60% of Indian cancers are preventable. 40% tobacco, 20% infection. 60% preventable, eminently preventable. This is the state you are here in Punjab and Chandigarh, where many people don't take tobacco, they don't smoke. So the incidence of oral cancer is the least in this country, provision in this country, in this state. And tobacco causes cancer. If you don't take tobacco, you will not have oral cancer. Very simple. 60% early detectable. You can't detect diabetes early. You can't detect hypertension early. Do you take your blood pressure every day? Blood sugar every day? But cancer is 60% early detectable. And cure rate is on an average 60%. If you see the published literature now, there are 5 cancers where the cure rate, 5-year cure rate has touched nearly 100%. 100%. JCO 2010 December article by Mark Krish, JCO 2010 December. Prostate cancer cure rate stage 1, 2 is 100%. Breast is 90%. Test is 96%. Thyroid 98%. What else you want? Well, there are some difficult cancers like say pancreas, lung cancer. Professor Jindal is very closely associated with that. There are some problems. People like public says, why don't you cure them? I told you, if you cure them today, we are all without job. So some cancer should be remaining there for us to, sustain ourselves, but it will all be finished. This month, till today, we know that all over the world, also in India, the commonest cause of death is cardiac. Next was cancer. This month, 3rd of September, there is a publication from McMaster's University, Canada, in Lancet. In certain age group, 3rd of September, in certain age groups, cancer has become #1 in many states there. And the prediction is, in another 10 years, all over the world, cancer will be the #1 killer. The WHO prediction is by the year 2025, cancer will be killing more than 70% of people of lower middle income countries. But the best side to the story is that it is eminently preventable, eminently curable, and we can do something about it. For our guests from outside, let me tell you, we have 1.7 million new cases of cancer in a year. 1.7 million new cases. And the cause of cancer is in India. The cause of cancer is in India. If you say the cause of the rate, of cancer, the incidence of cancer in the United States, including, if you include melanoma, it's 500 plus. If you say what is the incidence of cancer in India, it is as low as 40 per 100,000 in a place called Barsi, village in Maharashtra, west, to 272 in a place called Aizawl in northeast. So 40 to 272, 7 times difference in the same country. This is the only country in the world. So cause is here. Those people take smoked meat,
smoked food, tuibur, which is very highly carcinogenic, and they live in a place where the cooking is done inside the house. So there are many other causes and all that. Post a vote of thanks on behalf of organizing committee. First and foremost, I thank FPSI Executive Committee members, Dr. Nalini Mahajan, Dr. Madhuri Patil, Dr. Sabita Gupta and Dr. Padma Rekha for giving us the opportunity to host this prestigious national event in the Chandigarh. Thank you, ma'am. My special thanks to our chief guest, Professor G.K. Rath, and guest of honor, Professor Amita Suneja, who despite being having their busy schedules, have found out time to grace the occasion. We are grateful to our international faculty, Professor Virgilio, Professor Christensen, Professor Anderson and Professor Kamal Oja for accepting the invitation to share their knowledge and views at this platform. I extend my thanks to eminent faculty members from Chandigarh and all over India for their valuable contribution to make this academic event more interactive. My heartfelt thanks to the organizing committee members for their guidance and encouragement in all our efforts. I thank all the delegates, distinguished invitees present here for accepting our invitation, member of media for interest in the covering the events, Mr. Sumit and his team who worked behind the screen for developing the venue and the audio visual. My special thanks to Pharma people for their contribution, CITCO for their support to organize this event successful. I owe special gratitude to the staff of Jindal IVF Center who has worked hard to ensure success of this conference. And once again, I thank you very much who all assembled here. Dr. Swati, may we all stand up for national anthem, please. Good evening to everybody, and Dr. Rath, I agree with you, cancer is a fantastic disease. My motto in life is, Zindagi zinda dili ka naam hai, murda dil khaat jiya karte hain. I am a survivor, not only of cancer, but prior to that, at the age of 40, acute pancreatitis. I am highly diabetic and have hypertension, and I'm also a thyroid patient. So she diagnosed and said, well, go to PGI, and there sits my doctor. And I think today the thing is, all of us who are attending and all of our colleagues who have not attended, it's time we should be talking about creation of awareness in educational institutions, in the press and in the public, so that next year we should be talking that all of India knows about it. Why not? That initiative was also taken by Vish. He actually told me that you must, yes, go and talk about it to everyone. That I do practice infertility, and we see so many more men who are childhood cancer survivors who get married and then later on come with infertility problems, and many much fewer women who actually get married once they have survived cancer and come in for infertility treatments. So one more appeal to the society that accept these girl survivors also, and let them flow in this mainstream of life, get married and look out for families, even if they have not preserved cancer. Now of course there is much more available. Those who did not preserve fertility, men or women. Men are given much more a chance in life. Women should also be given the same chance. In pregnancy, that means the PS was not done. We are talking about decrease of cancer cervix when other countries have achieved a CS cervix free decades back. There is no reason for us not to. We have enough speculums in this country. We have enough gynecologists in the country. But unfortunately, many times, many of us still falter to examine the breast and to examine the cervix. It's not only our professional responsibility, take it as a legal responsibility. There are many other non-oncological conditions where it probably will require fertility preservation, and one of them is the immunological causes. Then we also have sickle cell anemias wherein we do a total bone marrow, we remove the bone, we give chemotherapy so that when we do the bone marrow transplant. There are a few people who are still going for fertility preservation in patients with endometriosis, severe endometriosis, because we know that probably with every time we do surgery for endometriosis, a large amount of cortical tissue is removed, and therefore
usually the AMH in these patients is very low. So this is one group for non-oncological, and the other is social, wherein patients want to postpone. And I have treated about 3 patients with immunological disorders, of which one was a SLE patient, and though she was given immunosuppressants, and she gave him after about a year, and she just conceived with ovulation induction with IUI. But there are other group of patients who are going to be put on immunological, immunosuppressants, and I think probably this is a group wherein if they have a partner doing an embryo cryopreservation, and if they don't have a partner, we need to do site cryopreservation. And once they are in remissions, then probably we could go for the embryo transfer. And if at all they don't reach remissions, then probably surrogacy is an option for this group of patients, and therefore fertility preservation should be done in this. I just want to add to what Marjorie said, that there is a lot of different indications that we in our country now, which are non-malignant, where we do fertility preservation for these patients. And indeed, autoimmune diseases is one of them. And we have frozen a lot of ovaries from women who are undergoing this. They have methotrexate, and they have a huge risk of becoming infertile. Patients with various other diseases like what's it called? Schizophrenia. I don't remember that. I don't remember the English word for that now. But I can tell you that one of the real challenges is to get this message across, right across the board of departments in the hospital, because there's so many different departments where you actually perform treatments that has an impact on the ovary. So this is certainly not only oncofertility. So I would request all the doctors not to be sympathetic towards the patient, but what we need is your empathy. Because for you it might be just one patient, just another patient, but that person would mean, the person would mean the whole world to somebody else. So what we need is just empathy and not sympathy. If you are very sympathetic to the patient, then the patient will not come for full treatment. I know cancer patient with 10 relatives coming for treatment, and they have never completed their treatment. Never. So very sympathetic is really troublesome. And this is not one example. There are so many examples. I'm knowing it's little bit older. So my age is around 60, practicing for 35 years. So sympathy, empathy should be there. Doctors are mostly not emotional, and emotion is one thing, but they should tell the truth to the patient. And so one should not hide any information, and that is the caregiver side. And from the patient should have that much confidence in the doctor that the patient should be able to tell each and every symptom or problems. That communication should be established between the doctor and the patient. Who still do not reveal to their near and dear ones that they are undergoing chemotherapy. Because one of the patients, I will not reveal the name, she said, I lost my hair, but I was not even told that you are undergoing chemotherapy, and I did not tell my relatives that I am losing hair. In fact, she says, I read a pamphlet in the newspaper that chemotherapy can cause hair loss. When I asked my relative, they said, nahi, aapko dawai diya, usse ho gaya. So the patient did not even was made to understand she is undergoing chemotherapy by the family. If we have a chemotherapy in such situations, obviously we are not talking about fertility at all. So I wanted to comment on that. When it comes to women patients, they receive very little of either sympathy or empathy. The caregivers often, as far as men are concerned, whether it is anything else. And also in certain cases, the care providers, if you permit me, I'll share what happened in Vijay while I was undergoing my treatment.
there was this young patient who was almost at the last stage. She was just about 24, 25. And she was crying all the time. And they were not able to refer to psychological care. They were not able to figure out why she was crying, because she was given all kinds of medication to take care of her pain. Her caregiver happened to be her sister. And she had 2 young children. This young woman came from a very poor family. They lived in one room apartment. And the sister got involved with her husband. So a doctor would never be able to come to know this, because I was sitting and waiting for my turn to undergo radiotherapy. Then I asked her what happened. And she shared this story. So what do you do in such situations? Philippines, we have the same problems. A big portion of society is financially challenged. My comment though would be something that is related to luck. I've been sitting in here observing the process of how you're trying to solve the fertility preservation awareness, trying to spread it around so that doctors, patients, and everyone involved in the process would get to know. We are in the process of inaugurating the Philippine Society of Fertility Preservation next week, in fact, the first meeting. And we were deciding whether we do it next year, because we're quite busy now, but we decided to do it this year instead. And just to tell you the luck that I made, because we decided to do that and we partnered with the Philippine Society of Oncology, and they were saying, what are you doing? Then they said, we're doing fertility preservation. That's nice. We hear about that, but we're not very familiar. And then they just happened to tell me that they were in the middle of a government project. It's called the National Cancer Protection Program. We were already involved with the Department of Health, and they were integrating everything together on the cancer referral system all over the country, and they already showed me the protocols of where and when they will be referring patients among themselves, the oncologists and the government. My luck starts when I saw them and they had their protocols. Early diagnosis and then early treatment. There was a space there, and I said, I want a space there and include fertility preservation. So now in the Philippines, fertility preservation will be part of a national cancer protection program. And we're not even opening yet the fertility preservation in the Philippines. So again, that's the luck that I'm into right now, and I think we have a head start with that. Our very, very notorious President Duterte, has provided funds for the National Cancer Protection Program. At least that's something that we are proud of what he signed for. And there's money to help Filipinos who will need fertility preservation as well. For them fertility preservation early, make them affordable as requested by Dr. Amita. I'm sure Dr. Rath, you're going to do something about it. सर आपका जो कहना था कि कैंसर है जो, क्योंकि हमारे जो लोग हैं आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले एक ऐसा था कि कैंसर का नाम लेना भी जो है वो भी ऐसे समझते कि कैंसर का नाम नहीं लेना। जब कैंसर का वर्ड आता था तो तब हम लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते थे, नहीं कैंसर का नाम नहीं लेना घर में। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि ये सबसे उन डिजीज के साथ क्या कहना चाहिए? ऐसा है, कैंसर के नाम सुन के लोग घबराते हैं ना, इग्नोरेंस की वजह से था। डॉक्टर साहब कैंसर ट्रीट कर रहे हैं, पिछले 40-50 साल से हम भी कर रहे हैं। हम लोगों का दोनों मिलकर प्रोबेबली 5 लाख पेशेंट हो गए जो हम क्योर कर चुके हैं, ठीक है ना। कैंसर ऐसा एक डिजीज़ है जो कि प्रिवेंट होता है। आप अभी पंजाब में हैं, पंजाब में लोग बहुत कम स्मोकिंग करते हैं, बहुत पान कम खाते हैं, ठीक है ना। ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा खाते हैं। अब डॉक्टर साहब पूछिए, यहाँ कैंसर का इंसिडेंस, मुंह का कैंसर है ही नहीं बराबर है। पीजीआई जब हम एग्ज़ाम लेने आते हैं, हम मुंह का कैंसर मिलता ही नहीं, क्योंकि तंबाकू नहीं खाओगे कैंसर कैसे होगा, ठीक है ना। तो कैंसर का एक कम भी इंसिडेंस है, और अर्ली डिजीज अर्ली ट्रीटमेंट में ठीक भी होता है। मैं आपको कुछ फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताता हूँ जो अपने को डिक्लेयर कर चुके हैं। जैसे युवराज सिंह, हमारे बड़ा क्रिकेटर है, छक्का मारने वाला क्रिकेटर, उसने एक यूवी कैन करके एक सोसाइटी बना रखा है, ही गिव्स हेल्प। आपको पता है लीजा रे, मनीषा क्योराला, ये सब एक्टिव है एंटी कैंसर, दे आर ऑल क्योर्ड ऑफ कैंसर।
आप कोई डायबिटीज़ क्योर करके दिखा लीजिए मुझे, कोई बीपी कर करके दिखा लीजिए, तो है ना बढ़िया डिजीज। नो डाउट। मतलब आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। सर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे ये डॉक्टर जिंदल ने यहाँ चंडीगढ़ के सिटी में किया है, आप सोचते हैं कि ये जलंधर, लुधियाना, बठिंडा, ये जो बेल्ट हैं सभी में हम ऐसा है, इसमें हम सबका रोल है, डॉक्टरों का लाइक अस एंड प्रेस लाइक यू। रीज़न ये है, लोगों को पता करना ज़रूरत है। कौन बताएगा कि ऐसा फैसिलिटी है? फॉर एग्जांपल, आप किसी यंग लड़की को ट्रीट करके उसको ओवरी ख़त्म कर रहे हैं, उसको पहले से बताने का हमारे काम नहीं है। इस तरह ओवरी प्रेजर हम कर सकते हैं तो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो रहा है ना। नो डाउट। तो पहले बताना तो जरूरी है। कौन बताएगा? आप बताएंगे, हम बताएंगे। अच्छा, हम क्या है, हम फिजिशियन, हमारे पास जो आते हैं उनको बताएंगे, बट आपका रीच टू दी जनरल पब्लिक है, उनको पता होना हम सबका फर्ज है। और ये भी बताना जरूरत है, पहले तो कैंसर ना हो, तंबाकू नहीं खाओ, कैंसर नहीं होगा। सिगरेट नहीं पियो, डॉक्टर साहब लंग कैंसर एक्सपर्ट है, लंग नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सब बताना हमारा काम है पब्लिक को। डॉक्टर साहब का, आपके परिवार का ये जो बहुत ही बड़ा आज एक इवेंटफुल जो है इवनिंग है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंसेज होती है, वी आर बोरिंग। इवन प्रेस, आप समझते हैं कि वो अपनी भाषा में सब कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ये एक जनरल टॉपिक्स थे जिसको लेकर सभी में एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या हो रहा है, कैसे है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ, इसीलिए हमने डॉक्टर रथ को बुलाया था, क्योंकि देश के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट ही नहीं है ये, पर वो ये आम लोगों के साथ चलते हैं, उनको समझा सकते हैं कि क्या है। और कई जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरे लिए भी ये नई बात थी कि कैंसर बड़ी फंटास्टिक डिजीज़ है, तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि कैंसर से डरने की बात नहीं है। ये बीमारी ऐसी है जो कि प्रिवेंट भी की जा सकती है और ट्रीट भी करी जा सकती है, और 60% केसेस में ऐसे हो सकता है। जो बाकी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, इवन हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, वो प्रोग्रेस होती रहती है। कई उनसे कैंसर से भी ज़्यादा भयानक सिद्ध होती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है जैसे। तो इसलिए इससे डरने की बात नहीं है। और आजकल यंग लोगों में बड़ा हो रहा है, तो उनकी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करनी जैसे है, जो कि उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि वो उस एरिया में भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये नई डेवलपमेंट है। तो आई थिंक अगर फ्यूचर में कम से कम जो यंग लोग हैं जिनको कैंसर है, अगर वो पेरेंट भी बन सकें, तो इससे बड़ी अच्छी बात कौन सी हो सकती है। एक चीज़ है जो मैडम ने बताया अभी, फ्रॉम दी फ्रॉम दी फ्लोर, आपने जो देखा होगा, कैंसर के बारे में अगर दो चीज़ें बताना चाहते हो लोगों को, आपने बोला भटिंडा में बताना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए कि ये एक टेक्निक है जहाँ हम प्रिजर्व कर सकते हो। और एक चीज़ भी बताने की ज़रूरत है कि जो वैक्सीनेशन मैडम ने बताया 9 से 15 साल के बीच में, जैसे हमारे लड़की पहुँच जाती है क्लास 5 में, 9 या 10 साल, आप उसको वैक्सीनेशन दो, कैंसर खत्म। सर्वाइकल कैंसर खत्म हो रहा है इस मुल्क में, स्वीडन में है ही नहीं। तो ये बात कैसे पता चलेगी? इवन गवर्नमेंट में बता रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट ने एक सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम भी चलाया था। ये कौन बताएगा? आप बताओगे। 2 डोज है, 2 डोज है, बस 2 डोज 9 to 15, 15 से ऊपर 3 डोज चाहिए। जैसे हमारे बच्ची क्लास 5 में पहुँच जाते हैं, 9 साल हो जाती है, खाली 2 डोज वैक्सीन में कैंसर आप प्रिवेंट कर रहे हो। बढ़िया चीज़ है ये नहीं? स्मॉल पॉक्स कैसे प्रिवेंट किया वर्ल्ड से? वैक्सीन। पोलियो कैसे प्रिवेंट किया वर्ल्ड से? वैक्सीन। बट ये जो वैक्सीन में प्रिवेंट हो सकते हैं, ओवम प्रिजर्व हो सकता है, ये आपको थोड़ा बताना पड़ेगा पब्लिक, क्योंकि हम लोग पब्लिक को जाके बता नहीं सकते। जो हमारे पास आता है उसके रिश्तेदार को बता सकते हैं। तो हम दोनों का रोल है। साहब, जैसे आज का जो प्रोग्राम था वो एक कॉन्फ्रेंस ना रहकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे डिस्कस हुआ कैंसर का, और सभी में क्यूरियोसिटी थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ प्रेस वाले हैं, जो हम लोग हैं, वो भी थोड़े से वो अपने टॉपिक पर ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज ये एक अवेयरनेस की तरह का प्रोग्राम था। क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम सब प्रोग्राम से डिफरेंट था, आई फुली एग्री विथ यू। और इसमें ये था कि ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो कि कैंसर की डिजीज़ से फाइट कर चुके हैं, एंड दे हैव सर्वाइव्ड द डिजीज़, कि वो अच्छी हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये एक मैसेज दिया सोसाइटी को कि कैंसर एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, कि ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर दैट। सो उन्होंने एक क्योरेबल डिजीज़ है, इसका पूरा आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। किस तरह आप ये डिज़ीज़ के इलाज के बाद हम इवन ये भी सोच सकते हैं कि इफ़ यू प्लान टू हैव ए बेबी इफ यू आर यंग, तो यू कैन इवन हैव योर फर्टिलिटी प्रिजर्व बिफोर ट्रीटमेंट।
सो मेन इस कॉन्फ्रेंस का थीम यही था कि जो यंग पेशेंट्स को कैंसर हो जाता है कि उनको ट्रीटमेंट से पहले भी ये ऑप्शन देना चाहिए कि हम आपके ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं कि आपके एग्स प्रिजर्व कर लें, या हम अगर मेल को कैंसर है तो उनके स्पर्म्स को क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, ताकि जब वो ठीक हो जाएं तो उन्हीं से उनका फिर प्रेगनेंसी हो सकती है, वो एक पेरेंट बन सकते हैं अपने बच्चे का जो जेनेटिकली उनका बच्चा होगा। वैसे क्या सोचते हैं आप जब भी कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट हो रही हैं उनमें अगर इस टाइप का साथ में पब्लिक फोरम हो और साथ में वो पेशेंट्स भी हों, जैसे आज का जो प्रोग्राम था, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट बनता है और वो कॉन्फ्रेंसेस भी थोड़ी सी आपको भी आज पहले देखिए आपने इतनी कॉन्फ्रेंसेस भी लगाई हैं, आप वर्ल्ड के एक नंबर 1 है, क्या कहना है? काफ़ी डिपेंड करता है कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है। अगर थीम है सिर्फ कि नॉलेज को अपडेट करना है फिर उसमें पब्लिक फोरम हम नहीं बुलाते, लेकिन इसका थीम था एक नया कंसेप्ट है जो अभी इंडिया ने अच्छी तरह इसको लिया नहीं है, क्योंकि कैंसर से लोग इतना डर जाते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि हम इस एस्पेक्ट के बारे में भी सोचें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था इसमें कि पब्लिक फोरम को करना, उनके थ्रू एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना कि पहले ही लोगों को पता चले कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो अपने इस चीज़ को कंजर्व कर सकते हैं एग्स को और स्पर्म्स को, ताकि आगे फ्यूचर उनकी फर्टिलिटी ठीक हो। तो जैसे आज यहाँ टॉपिक डिस्कस हुआ कि सेक्स एजुकेशन है वो देनी चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और इससे वो लोग भागते हैं। आप गायनिकोलॉजिस्ट हैं, आप लोग इस चीज़ को अवेयरनेस की तरह एक प्रोग्राम्स बना सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आजकल के बच्चे हैं जो वो दे गो फॉर दीज थिंग्स बट दे आर नॉट अवेयर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। दिल्ली में वी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स वी आर गोइंग टू स्कूल्स फॉर एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन, और हम बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। एक चीज़ हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। इवन स्कूल्स में वी हैव टू टेल देम कि सेक्स एजुकेशन देने से अगर उनको अपनी बॉडी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि वो एक फ्रेंडशिप के चक्कर में एक गलत रास्ते भी चल पड़ते हैं। सो हमें उनको बताना पड़ता है कि क्या सेफ है, स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ HIV की होने का डर है। पहले हम डरते थे लड़कियों को प्रेगनेंसी ना हो, अब हम डरते हैं लड़कों को भी जो हो सकती है कि ऐसे अनसेफ प्रैक्टिसेस करने से कि उनको HIV भी हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बल्कि NCERT की बुक्स में भी आई थिंक चैप्टर्स हैं जहाँ पे उनको अपनी ह्यूमन बॉडी का बताया जाता है एंड हाउ रिप्रोडक्शन अकर्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ सेफ सेक्स। कम से कम अगर इंडल्ज करें तो सेफ्टी होनी चाहिए, और स्कूलों में ये भी दिखाना चाहिए कि व्हाट आर नेगोशिएटिंग स्किल्स। अगर वो किसी ऐसी जगह में फंस जाते हैं, हाउ टू से नो टू इट। बेस्ट मैसेज टू सोसाइटी इज दैट से नो टू इट। थैंक यू, थैंक्स डॉक्टर साहब। इस तरह के कॉन्फ्रेंसिस जिस पब्लिक फोरम और प्रेस इंटेंगल ਸੀਗੀ, और ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ? आई थिंक लेडीज़ ਨੂੰ शादी ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਝ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡੇਟ ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
थिंक ये टॉपिक इहो जिहा है जिहड़ा साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़रूरी नहीं है, ये एक सोशल टॉपिक भी है बिकॉज डॉक्टर होने के नाल असी सारे वी आर ऑल लेडीज़ ते असी सोसाइटी के मैंबर ने एंड वी हैड मैंबर फ्रॉम द सोसाइटी तुसीं देखे जिहड़े 2-3 पेशेंट इत्थे आके सारी जनता के अगे बोल के गए ने उन्हां दे विच इन्ना उत्साह उन्हां दे विच इन्ने इमोशनस सो असी ह्यूमन बीइंग्स जिहड़ा इमोशन देखते हैं उहो जिहा इमोशन असी फॉलो करते हैं। जे एक पत्थर मारना शुरू होंदा सारे पत्थर मारना शुरू हो जाते हैं, जे एक पॉजिटिविटी ते अप्रोच के नाल करते बाकी सारे उस तरह ही करते हैं। सो आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुसीं माहौल क्रिएट करो ताकि पब्लिक की रिसेप्टिविटी भी होए ते उन्हां नूं उम्मीद भी जगाओ ते नॉलेज भी बताओ। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर महेश का उपराला जिहड़ा असल है डॉक्टर महेश जिंदल का जिहड़ी हमेशा क्रिएटिव है और हमेशा पॉजिटिविटी उन्हां दी अखां च हुंदी। आई थिंक हर एक सोसाइटी दे विच हर एक प्रोफैशन दे विच इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ होने चाहिए ने सो दैट एवरीबडी डज देयर जॉब अकॉर्डिंगली सो दैट हुण आई एम श्योर तुसीं प्रैस दे विच हर एक किस्म के बंदे होंदे कुछ एरिया नूं कवर करदे हो कुछ बाकी एरिया नूं कवर करदे हो। सो आई थिंक एवरीबडी नोज द स्ट्रेंथ डॉक्टर उमेश की स्ट्रेंथ हैगी है कि नवे टॉपिक के बारे सोच के दैन वी प्लान एंड वर्क एज अ टीम। आई थिंक वो तुसीं टीम एफर्ट तुसीं देखी है कि सारे इन्ने दूरों लोग आए ने एंड दे हैव पार्टिसिपेटेड इन सो दैट इज़ वाज द दसो अज की जिहड़ी कॉन्फ्रेंस हैगी आ वो कॉन्फ्रेंस ना रह के बल्कि एक अवेयरनेस की तरह जिहड़ी हैगी आ लोगों नूं लगी वो लोग जिन्होंने इनू ज्वाइन किया चाहे वो प्रेस वाले सीगे चाहे वो आम लोग सीगे चाहे वो डॉक्टर सीगे सारिਆਂ ਨੂੰ एक बहुत वधिया मैसेज जिहड़ा हैगा अज कन्वे होया और कोई भी जिहड़ा इंसान है जिन्ना भी अपना टाइम सीगा जदों दी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई शुरू तो लैके एंड तक हरेक बंदा पूरी एनर्जी दे नाल उत्ते बैठा रहा और हरेक बंदे दी अखां दे विच एक जिग्यासा सीगी कोई ना कोई जानन दी। की कहना चाहोगे? ये एक नई फील्ड है जिहड़ी कि ईवन अवेयरनेस डॉक्टर्स नूं भी नहीं है, पब्लिक नूं अवेयरनेस तो खैर टाइम नाल आएगी पर जिहड़ी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स नूं भी इस चीज़ की अवेयरनेस होना सब तो पहला जरूरी है। अवेयरनेस के नाल नाल उन्हां दे एटीट्यूड दे विच चेंज उन्हां दे नॉलेज दे विच चेंज ते फिर फाइनली दैन इट ट्रांसलेट्स इनटू देयर प्रैक्टिस। उस चीज़ च बहुत टाइम लगता है। इत्थे सिर्फ गायनी वाले इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ IVF वाले इन्वॉल्व नहीं है, इत्थे सारे लोग जिहड़े कि कैंसर के मरीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं, स्पेशली रेडियोथेरेपी वाले, कीमोथेरेपी वाले, सर्जरी वाले, सब लोग इन्वॉल्व हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हुंदी है वो टाइम की शॉर्टेज है बिकॉज अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट यू कैन क्योर कैंसर पर जे आप डिले करते हैं ट्रीटमेंट दे विच जे किसी होर परपज़ लिए भी करते हैं भी डायगनोज तो हो गया पर डिले हो रहा ट्रीटमेंट फिर वह परपज़ ही डिफीट हो जाता है। तो साडा एक चैलेंज है ये कि कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्रोमाइज़ किए बिना असी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकीए। दैट इज़ द बेसिक एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी कि असी ब्रिंग आउट करना चाहते सी सारे लोगों वास्ते जनता वास्ते प्रेस वास्ते कि ये अगे आए तो बहुत सारे यंग लोगों यंग जिहड़े कैंसर सर्वाइवर्स हैं उन्होंने एक उम्मीद की किरण बने। दसो ये जिहड़ा मैसेज हैगा एक पब्लिक मैसेज की तरह भी है जिद्दां पब्लिक फोरम भी तुसीं अज कीता आने वाले समय के विच जिद्दां बठिंडा बेल्ट है साडी जलंधर बेल्ट है लुधियाना बेल्ट है फिरोजपुर बेल्ट है फाजिलका बेल्ट है आने वाले समय के विच अगर कोई संस्थावां जिहड़ियां NGOs ने अजकल पहलां लोग कैंप लगाते सी असी अखां का कैंप लगाते असी दिल के कैंप लगाते लेकिन अज जिहड़ी मेन जिहड़ी हैगी कॉज जिहड़ी हैगी आ बच्चियां दे विच जिद्दां छोटियां बच्चियां तो ला के अकरस जिहड़ी कैंसर की वध रही आ की कहना चाहोगे कि अगर NGOs तुहानूं अप्रोच करते हैं किसी भी पंजाब के हिस्से दे विच हरियाणे के हिस्से दे विच या होर जिथे जिथे भी असी मतलब साडी आवाज़ पहुँच रही है ताकि तुसीं उन्हां दे नाल अटैच हो सकते हो? हाँ बिल्कुल ज़रूर होना चाहेंगे क्योंकि ये अवेयरनेस पब्लिक के विच सिर्फ NGOs कर सकते हैं, असी डॉक्टर्स नहीं कर सकते। असी तो केयर प्रोवाइडर है, असी गाइड कर सकते हैं भी की हो सकता की नहीं हो सकता पर जिहड़े मैसेज नूं फैलाना तो जिहड़ा प्रेस के हाथ च है या NGOs के हाथ च। And you teach NGOs and press? Yes असी उन्होंने ये दस जरूर सकते हैं कि की पॉसिबल है। असी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, असी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर्विस इस कॉस्ट वगैरह भी उहदी जे मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होवे या कुछ रिडक्शन होवे
ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਉਣ। ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲੇਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਲ IVF ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨਈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਤਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋਨੇ पे सुहागा और ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ क्षमता ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ क्षमता ਹੈਗੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਰਬੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਸੱਚ ਪਰਪਸਿਸ ਆਲਸੋ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਐਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥਰੂਆਊਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਸ ਇੰਜੋਇੰਗ ਬਿਕॉज ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼। ਔਰ क्या कहना चाहिए? Fertility preservation is something completely unique, different. It is for a person who has been suffering from cancer, already hit by a storm, where we try to do our best to restore her back to her normal woman self. So this is a new event all over the world, but it is about 5 years old in India. We formed the society and we have been actively working. Our goals are three numbers. The first number is we have to create an awareness about this among ourselves. That means I have to recruit more number of members into the society, making an awareness about the fertility preservation on various cancers, different techniques, everything has to be done. Then the second phase is involving all the other specialists, medical oncologists, surgical oncologists, surgeon, all put together. I have to create an awareness among them, saying that if a young girl with cancer comes, do not treat the cancer and send her. Think of her life after cancer, and you will be able to cure with your ability to a 90 to 95%. What happens when she gets cured? What happens to the fertility? Will it be affected? What are all the steps to be taken? So this is the second step where we propagate among all the medical field. Third step is we take it to the public. For example, one simple example if I tell you is appendicectomy was done by an open surgery before. And then the next step came where the appendicectomy can be done by a laparoscopy and open surgery. So if you tell a patient saying that there are 2 steps, I would prefer to do it open, then the patient says, yes, I will, okay, whatever you feel like is safe for me, you do it. But today, that so much of the awareness, patient comes and asks, if you want an appendicectomy, please do it under laparoscopy. If you can't do it, send it to somebody else.
So this is the way in which we want the patient to take it to the third step, where she will come and say, what about my fertility potential? How will I just regain it? Is there any way of just preventing their atrophy? I want to have a child, and I want my baby to have a child when the baby grows up. For example, childhood cancer. All this awareness, the third step, we want to create it. In this manner, the first step is increasing the awareness, conducting the annual conference where we come and deliberate on various newer developments which is taking place in the field of fertility preservation. Thank you, sir. Thank you.